This is the second example of calculating depreciation by a straight line method. But here in this example, the cost of the machine is already given to you, remember? You don't need to calculate the cost of machine because the cost of machine is already given to you. Machine is purchased on March 1st, 2010 at a cost price equal to rupees 300,000. So while calculating depreciation, we have to write the cost of machine. Then we have to subtract the salvage value or the scrap value or the residual value from the cost of machine. And then the result is divided from the life of machine, which is equal to 10 years. So, okay, we are writing here cash, the cost of machine, which is equal to 300,000. And we are subtracting the scrap value or the salvage value from the cost of machine. And then the life of machine, which is equal to 10 years. So depreciable cost is divided from the life of machine, which is equal to 10 years. Here we have got the annual depreciation or yearly depreciation, that is equal to 25,000. We have purchased machine on March 1st, 2010 and we have exchanged our machine. Remember, here in this example, we are exchanging our machine on December 31st, 2014. So we have to calculate depreciation till December 31st, 2014. So how I am writing here, this is the first year depreciation. Accounting year closes at December 31st, 2010. Then second year depreciation, then third, then fourth, and then fifth. Because we have used a machine till December 31st, 2014. So I am writing the annual depreciation in front of all the years at the end of accounting period. And side by side we are also accumulating depreciation. We need to understand here, we also need to understand one thing. That is the date of purchase of machine. We have purchased machine on March 1st, 2010. It means we have not used the complete 12 months or a year for 2010. हमने 2010 में मशीन पूरे 12 महीने इस्तेमाल नहीं किया है. We have used machine only for 10 months because we have purchased machine on March 1st, 2010. ये जो 25,000 हमारा आंसर आता है, this result is an annual depreciation. Depreciation charges for the 12 months or for a complete year. So we have not used the machine in a first year all the 12 months. We have used only for the 10 months. So what I am doing here, I am just multiplying 10 and divide 12. We are multiplying 25,000 by 10 and divided by 12. In this way, the result is 20,833. So 2010 में जो हमने मशीन को इस्तेमाल किया है, हम कह रहे हैं वो 20,833 रुपये का हमने मशीन अपने अंदाजे के मुताबिक ये हमने इस्तेमाल किया है. But in the second year, it starts from January 1st, 2011 and closes at December 31st, 2011. We have used all the 12 months, so I can write here. There is no need to write here, but just to explain you, I am writing here, we have used 12 months out of 12. So we have used the complete year for the second year. हमने यहाँ मशीन पूरे 12 महीने यूज़ किया है, यानी पूरा एक साल इस्तेमाल किया है. तो आंसर इसका 25,000 ही होगा. इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा है. अदरवाइज इसको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मेंशन करते हैं तो वो गलत भी नहीं होगा. सिमिलरली in the 2012, 2013 and 2014 we have used the machine or we have utilized the machine for a complete year. So depreciation would be charged annually or yearly
फॉर 2011, 12, 13 एंड 14। तो इस तरह हमने एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया है 5 years का। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द गेन और लॉस on disposal of machine. Remember, here in this example we are not selling our machine, we are going to exchange our machine, and the cost of new machine, here you can see here, the cost of new machine is equal to 500,000, and the trade in allowance of the old machine, and the trade in allowance of the old machine is equal to 1,90,000. What is the meaning of trade in allowance of the old machine? I explain you. Okay, right, we are going to calculate the gain or loss on disposal or on exchange of machine. So we are writing here the cost of machine. Remember, the cost of machine here in this example is already given to you. You don't need to calculate the cost of machine. This cost of machine is already given to you. The total capital expenditures while purchasing a machine is rupees 300,000, which is already given to you. So here in this example we don't need to calculate the cost of machine. Cost of machine is given to you, that is 300,000. We are subtracting accumulated depreciation from the cost of machine. In this way we have calculated the book value or the balance. What is the meaning of this? हमने 3 लाख का मशीन खरीदा था। आज की डेट तक दिसंबर 31, 2014 तक हम 1,20,833 इतने अमाउंट का मशीन यूज़ कर चुके हैं अपने अंदाजे के मुताबिक। तो ये हमारी बुक वैल्यू बन गई है। अगर मार्केट में हमें बुक वैल्यू से ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा गेन हो रहा है, और मार्केट में अगर हमें कम रिसीव हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है। वी आर एक्चुअली एक्सचेंजिंग आवर ओल्ड मशीन फ्रॉम द न्यू मशीन, and the trade in allowance of the old machine is equal to 1,90,000. जब आप मशीन एक्सचेंज करवाने गए तो जो शॉपकीपर था या जो भी सप्लायर था उसने आपसे ये कहा कि वो आपको आपके पुराने मशीन के 1,90,000 देने के लिए तैयार है एक्सचेंज में, और आपकी जो बुक वैल्यू थी वो आपकी मार्केट वैल्यू से कम है। आप चेक करें, आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करें तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही है। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब ये होता है आपकी पुरानी चीज़ की जो वैल्यू है वो 1,90,000 बन रही है, तो इसका मतलब आपको गेन हो रहा है। डोंट बी कंफ्यूज विद दिस ब्रैकेट। द गेन इज ऑलवेज शोन ऑन द क्रेडिट साइड और राइट साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये ब्रैकेट माइनस साइन को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है, आप माइनस साइन अगर शो नहीं भी करते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि गेन को क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं। Here we have to compute the cash payment also. Don't forget to compute the cash payment. You can see we are purchasing a new machine that is equal to rupees 500,000. हम नया मशीन खरीद रहे हैं जो कि 5 लाख रुपए का है, और हमारे मशीन के जो सप्लायर ने एक्सेप्ट किए हैं वो 1,90,000 1,90,000 एक्सेप्ट किए। तो इसके ऊपर की अमाउंट आपको कैश पे करनी पड़ेगी। 5 लाख रुपए का नया मशीन है, आपके मशीन के 1,90,000 है 1,90,000, so it means you have to pay the cash 310,000. So hopefully this computation is complete computations are clear to you. Now we have to record all these results in journal form. So we start from here. We are purchasing a machine by paying cash. So this is the cost of machine debit, cash credit. Secondly, we are going to calculate the depreciation. It means adjusting and closing entries for all these 5 years. We have to calculate the adjusting and closing entries, which has already been discussed in our previous video or example. Adjusting and closing entries for all 5 years. So these are all the adjusting and closing entries. So hopefully these entries are also clear to you, or you can learn from or you can understand from our previous video. Let me explain you when machine is exchanged how this computation is shown in journal entries. Once we exchange our old machine from a new machine, we are exchanging our old machine from a new machine. So a machine account is increase. हमारा एसेट बढ़ रहा है। एक तो हम नया मशीन खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 5 लाख रुपए, तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है।
मैंने उस एसेट को डेबिट कर दिया। हमारा पुराना मशीन हम बेच रहे हैं तो पुराना मशीन हमारा डिक्रीज हो रहा है, उसको मैं क्रेडिट पे लिख रहा हूँ। इसी तरह हम क्योंकि मशीन एक्सचेंज करवा रहे हैं तो हमें कुछ कैश भी पे करना होगा। कैश हम पे कर रहे हैं, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, वो एसेट है, उसको मैंने क्रेडिट में लिख दिया। तो ये तो सिमिलर, इट्स अ वेरी सिंपल, एसेट इंक्रीज हो उसको डेबिट कर दें, एंड ऑन द अदर साइड टू एसेट्स आर डिक्रीजिंग, we have given the name old machine and the cash. Now accumulated depreciation is also closed by adding all the accumulated depreciation. The amount becomes equal to 1,20,833. This is also explained you in our previous example why accumulated depreciation is written at the debit side. तो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज में तमाम accumulated depreciation क्रेडिट में लिखे थे, अब उनका टोटल करके हमने डेबिट में करके उसको ज़ीरो कर दिया। हम कह रहे हैं अगर हम मशीन ही हमारे पास नहीं है तो उसका डेप्रिसिएशन भी एक्यूमुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़ीरो हो गया। रिमेंबर, गेन, प्रीमियम, प्रॉफिट, इनकम आर ऑलवेज शोन एट द क्रेडिट साइड, सो वी आर रिकॉर्डिंग द गेन एट द क्रेडिट साइड। So this debit and credit side becomes equal, which suggests that we have made all the computations correctly. Hopefully this example is also clear to you. Thank you.